Hello everyone, I hope you all are having a great time. So this is Zui Khan. So today I come up with some tenses. So in today's video we are going to talk about some tenses. As you know, tenses is the form of the verb that shows when something happened, when something is happening, and when something is going to happen. So let me give you an example, like she goes to school. In this sentence, we know that the word goes shows that it is the present tense. So आज की वीडियो में हम सिर्फ tenses के बारे में पढ़ेंगे. So let's get started. Okay, first let me tell you what is tenses. Once again, tenses are the forms which are taken by a verb to show the time of an action or state of an event. Yeah. So as you know, there are three tenses: present tense, past tense, and future tense. What is present tense का मतलब क्या है? कोई भी action जो currently going on हो रहा है, या or the action which is currently going on or habitually performed. So past, when we talk about past, so you are going to express an action that had happened. Yeah. So future, in future you are going to express an action that has not yet happened. So first we have to go through the present indefinite tense, जिसको आप present simple tense भी बोलते हैं. ठीक है. इसकी डेफिनेटली सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगी. कोई भी सेंटेंस जिसकी एंडिंग ता है, ती है, ते हैं से होगी, दैट वुड बी योर प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है. और इसका फार्मूला है दैट इज़ SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. डेफिनेटली यू माइट नो सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन फिर एक और दफ़ा मैं बता देती हूँ. सब्जेक्ट कोई भी द परफॉर्मर, ठीक है, या डूअर. वर्ब जो होता है, जो भी एनी एक्शन, कोई भी एक्शन होगा उसको वर्ब कहते हैं. ऑब्जेक्ट जिस पे आपका काम हो रहा हो. ठीक है. सो इसका आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा. इसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होंगे? डू और डज. ठीक है. तो इसका ये है कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डू और डज को यूज़ करेंगे. ठीक है. And also if we are going to talk about if you're going to talk about negative sentence, then we are also going to use do and does. ठीक है. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जिस तरह के वो खाती है, she eats. अगर मैं कहूँ वो खाना खाती है, she eats the food. सो ये इस सेंटेंस से मुझे पता चल जाता है कि ये एक सिंपल टेंस है. लाइक ता है, ती है, ते हैं. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिसकी कोई भी सेंटेंस जिसकी एंडिंग ता है, ती है, ते हैं से होगी, दैट वुड बी योर प्रेजेंट सिंपल टेंस. ठीक है. इसमें आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होगी. और हाँ, एक और चीज़ मेंशन करना भूल गई कि एस और एस लगाना होगा. इफ़ यू टॉकिंग अबाउट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ द एस एंड एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. और जब आप इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, लाइक आई मीन like if you're talking about third person, like I, we, they, and you, or plural noun, then you are not going to add s and es with the verb. Yeah. Like, so let's talk about the negative one. वो नहीं खाती है, she does not eat. Here I am using the helping word does and also not. Yeah, she does not eat. So when I'm going to make the interrogative, then I will write it down like, does he not eat food? क्या वो खाना नहीं खाता है? So definitely you might know कि do जो है वो कौन कौन से pronouns के साथ आएगा. अगर आप बात कर रहे हो he, she, it और singular noun की, तो उसमें आप उसके साथ जो helping verb यूज़ करेंगे वो है does. So if you're talking about I, we, they or you, then you're going to use the do helping verb do. Yeah. Like I do not play, I do not eat. Do I eat? Yeah. So this is present simple tense. Yeah. So now we are moving toward the present continuous tense. Continuous tense को progressive tense भी कहते हैं. ठीक है. इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि कोई भी सेंटेंस जिसकी एंडिंग रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं से होगी, दैट वुड बी योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस. ठीक है. तो इसका फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ING और ऑब्जेक्ट. लाइक
और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होंगे वो हैं इज़, एम, आर, लाइक, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इज़ है वो कौन कौन से प्रोनाउन के साथ आएगा, ही, शी, इट, एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज़ आएगा, और आई के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो है एम, लाइक आई एम ईटिंग फूड, और आर जो है उसके साथ आई, वी, दे और यू, और प्लूरल नाउन के साथ आर यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइक लेट मी गिव यू एग्जांपल, लाइक आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, here I am using the helping verb am, and deliver is the first form of the verb plus I am adding ing, ठीक है। So I am delivering lecture, he is teaching the students. So if I make the interrogative, like am I delivering lecture, is he teaching the students, like they are eating the food, are they eating the food? So am I not delivering lecture? So now let's move toward present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो होता है जो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ हो, बिगिन हुआ और स्टिल कंटिन्यू हो, ठीक है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जो भी सेंटेंस जिसकी एंडिंग चुका है, चुकी है, चुके हैं से होगी, दैट इस मीन इट इज़ योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या। सो इसके लिए फार्मूला, डेफिनेटली फार्मूला तो पता होना चाहिए ना। इसका फार्मूला होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप देखें कि यहाँ कोई भी परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो वहाँ पे आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होगी, ठीक है। और इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैज़ और हैव, या। And you can also add part participle by adding ed, yeah. So let's talk about, if you're talking about he, she, it or singular noun, then definitely you are going to use the helping verb has. So if you're talking about I, we, they, you and plural noun, then you are going to use have, ठीक है। तो like she has delivered lecture, here I am using the helping verb has, and here also I'm using the third form of the verb delivered lecture. We have talked before, it has rained, ठीक है, it has rained, rain, rained, yeah. So if I talk about interrogative, like has she delivered lecture, has she not delivered lecture, ठीक है। So have we talked before, have we not talked before? So now let's move toward the present perfect continuous tense. This means present perfect progressive tense. So which is mean started in past and still continue, yeah. So इसकी भी आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन का पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस जिसकी एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से होगी, दैट वुड बी योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें आपने सिंस और फॉर का भी यूज़ करना होगा, ठीक है। सो आल्सो लेट मी टेल यू some what is the difference between the since and for, yeah. So you should know, okay, since you use since when you are talking about some when you know about the starting point, ठीक है। और for जो है when you have no specific time, so you are going to use this one, since starting point, and for with the period of time, yeah. So let's get started. इसका फार्मूला होगा, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे हैज़ और हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी और सिंस और फॉर यूज़ करना होगा, ठीक है। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल, लाइक मैं सुबह से पकोड़े बना रही हूँ, आई हैव बीन मेकिंग फ्रिटर सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग पॉइंट के पूरे टाइम का पता है, तो मैं इसलिए सिंस लगा रही हूँ। इफ़ आई से आई हैव बीन मेकिंग फ्रिटर्स फॉर 2 hours, क्योंकि 2 घंटे से, ठीक है, इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम। सो लाइक ही हैज़ बीन टेकिंग बाथ, या ही हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 hours, ठीक है। हैज़ ही बीन टेकिंग बाथ फॉर 2 hours? I have been living in this house since 2007. Yeah.
So have I been living in this house since 2007? She has been making she has been making and she has been making noise for 2 hours. Yeah, she has been making hours since morning, since evening. Yeah. सो इसमें इंट्रागेटिव और नेगेटिव मैंने ये साथ बता दिए हैं. इंट्रागेटिव में जब आप कोई इंट्रागेटिव मीन क्वेश्चन आई मीन इंट्रागेटिव में आप ये करते हो कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आ जाते हो, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ing और सिंस ऑफ फॉर यूज़ करना होता है. ठीक है. So I think that's more than enough for today. Yeah. So I hope you like it. So if you have any confusion, you can ask me in the comment box. Thank you.